morning, dear student. In today's online classes for senior student 11th and 12th class, I will teach them writing. In writing, I have taught them article. Now, in the last previous video, which I have made study, in which I also taught you an article. उसमें मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया था. Now this is an easy answer. You have to look at the blackboard, the notes given below. जो भी नोट दिए गए हैं उसमें एक हेडिंग की जरूरत पड़ती है. तो क्या होता है, ये एग्जामिनेशन के बारे में है आपका. नर्वस कंडीशन है, लैक ऑफ, जब भी आप एग्जामिनेशन देने जाते हो नर्वस कंडीशन होते हैं. लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, हेजिटेशन, इसके साथ थी प्रेइंग गॉड, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था. कैंडिडेट्स रशिंग टुवर्ड्स एग्जामिनेशन, घर तो भाग रहे थे. अलर्ट 9 बजा नवाज था. फाइंडिंग देयर सीट्स, अपनी सीटों को पाकर सभी बैठ गए थे. एंड कंडीशंस ऑफ द एग्जामिनेशन हाल कुछ बताई गई थी. शर्तें, क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे. इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द इन्विजिलेटर से दिए गए थे कुछ निर्देश. रीडिंग ऑफ द क्वेश्चंस एंड हार्ट पॉन्डिंग, हृदय धड़क रहा था. क्वेश्चन इजी, जब मैंने जाना क्वेश्चन सरल थे. नर्वसनेस गाउन चली गई थी. इनफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया था. राइटिंग आंसर लिखने के बाद आउट बाहर आ गया. शेयर जॉय विद क्लासमेट. सो सम पॉइंट्स केम टू योर माइंड, कुछ विचार आपके दिमाग में आए होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन आर्टिकल देयर इज अ हेडिंग. सो योर हेडिंग विल बी माय एक्सपीरियंस इन बोर्ड एग्जामिनेशन. लिख सकते हो, बाई लाइन भी लिख सकते हो उसके द्वारा. तो you may write down like this. Yesterday I had gone to give my board examination. When I was entering into the school hall, then I was feeling very nervous, and since it was my first board examination, so I was in lack of confidence. There was a lot of hesitation in me. I was praying to God that my paper may go well, अच्छी तरीके से जाए. When I reached into the gate of the school or center, then I saw, मैंने देखा, all the candidates were rushing toward the examination hall and they were searching their roll number and room number from the list. There was a lot of noise. With a great difficulty, after finding their roll number and seats and room number, we sat on our appropriate seats to बैठ गए. There were some conditions of the examination hall. After some time, question papers were distributed. बांटे गए थे. Instructions from the invigilator means कि there were given some instructions from the invigilator. Reading of the question paper, he told that you have been allotted 10 minutes to read the question paper and then you begin to write. When I was reading the question paper, then my heart was pounding. मेरा हृदय धड़क रहा था. Questions easy, मतलब when I found that there were 90% easy questions, then my all nervousness have gone, चली गई थी. Then came in me enough self confidence आ गया था. I was writing the answers of the question correctly. After writing the answer, I came out of the examination hall and on the way, I shared joy with all my classmates. Dear student, this is an easy question. So you have to write in full as articles in your fair copy. That's all.